हे गाइस वेलकम बैक टू द फुटबॉल पार्लियामेंट। पिछले 3-4 दिनों में ट्रांसफर एक्टिविटीज बहुत जोर से हाई हो रखी हैं फुटबॉल वर्ल्ड में एंड वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो व्लाहोविच टू यूवेंटस इज ऑलमोस्ट अ डन डील अकॉर्डिंग टू फब्रिजियो रोमानो एंड मेनी अदर सोर्सेज। तो बिफोर वी टॉक अबाउट दिस डील विल टॉक अबाउट व्लाहोविच इन जनरल। तो व्लाहोविच की मैं कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करना चाहूंगा दैट ही इज वेरी गुड इन द एयर। उसकी फिजिकलिटी काफी अच्छी है। His playing style is always to support the ball by offering a short option. He can drop into spaces to receive a ball from a higher position. तो ये उसके कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स है। नाउ वील टॉक अबाउट द डील इन जनरल कि ये कितने बड़ी डील है, प्लस यूवेंटस का प्लान क्या है एग्जैक्टली। इज इट टू बिल्ड द गेम अराउंड व्लाहोविच? तो अंशुराज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे हिसाब से तो अंडर एलेग्री उनके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है अभी, लाइक प्रॉपर स्ट्राइकर। सो आई थिंक व्लाहोविच इज द आंसर टू दैट स्ट्राइकर पोजीशन। बट उसके अराउंड गेम तो डेफिनेटली नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। इफ इफ यूवेंटस कैन होल्ड ऑन टू डिबाला, एंड एलेग्री बहुत बड़ा डिबाला फैन है, सो हाँ। आई थिंक यूजुअली डिबाला के अराउंड ही गेम बनेगा। बट देयर आर रूमर्स ऑफ डिबाला आल्सो लीविंग, सो वी डोंट नो। हम्म। क्योंकि हमने स्टार्ट ऑफ द सीजन यूवेंटस में सुना था दैट दे विल मेक द गेम अराउंड डिबाला एंड रोनाल्डो विल हैव टू लीव एंड ही वोंट हैव अ बिग मच ऑफ अ रोल। तो ये सुन के रोनाल्डो ही वेंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो नित्यम, डू यू थिंक कि फ्लाहोविच के अराउंड गेम होगा और इज इट किएजा दिस टाइम? बिकॉज व्हाट वी कैन सी इज कि अल्वारो मोराटा वोंट गेट एनी गेम टाइम एंड ही विल गो बैक टू एटलेटिको मैड्रिड एंड समथिंग और द एल्स वुड हैपन फॉर हिम। आई थिंक अच्छा साइनिंग है फॉर देम। ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है थोड़ा, 70 million plus 5 million add-ons, but if फॉर अ they क्लब इन get डेट it इट इज right, प्रेटी एक्सपेंसिव। या। yeah. But if they get it right, Vlahovic का I think main goal Real है, so I think he will want to join Real 2-3 साल में। बारसा नहीं हो सकता, छोड़ दे अंशराज। बट हाँ, 2-3 साल बाद ब्लाहोविच का तो यही प्लान होगा, एंड दे कैन मेक गुड मनी इफ ही इज सक्सेसफुल। प्लस क्या कोइंसिडेंस है, 2-3 साल बाद रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर पोजीशन वेकेंट हो जाएगा। प्लस सॉर्ट ऑफ व्लाहोविच और बेंजेमा का गेम स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है, लिंकिंग अप द प्ले। तो सब सही रहेगा। एनीवेज, व्लाहोविच टू यूवेंटस। उसके बाद एक और मूव हुआ है जो कि कल ही हुआ, ट्राओरे टू बार्सिलोना ऑन अ लोन डील। तो अंशराज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ गुड शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट फॉर डेम्बेले, बिकॉज डेम्बेले तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग एनीमोर अनलेस ये पिछले 2 दिन में वो अचानक से ही टर्न्स, लाइक ही एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय बार्सिलोना, व्हिच इज अनलाइकली। बट ठीक है। बट Traore will fit perfectly into Xavi's system. He's also a La Masia product, so उसको उतना adaptation difficulty भी नहीं रहेगा. Plus he's taking a wage cut to play for us on loan. So I mean no questions. I mean even if the signing fails, तो कुछ ज्यादा हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा. So it's like a low risk signing, and I'm pretty big fan of Rama Traore, my goat. Yeah. न्यू गोट एक्चुअली। एनीवेज भाई, लेकिन बार्सिलोना का तो अलग ही सीन चालू है। दे आर लिंक्ड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स नाउ, एस्पिलिक्वेटा, टाग्लियाफिको एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक टाइम पे हम लोग को सुनने में ये आ रहा था दे वोंट बी एबल टू साइन एनीवन एट ऑल। तो ये सुनना काफी सरप्राइजिंग है, ऑल्दो इट्स अ लोन मूव। एनीवेज, एंथनी मार्शियल टू सेविया। नित्यम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्शियल गोइंग देयर? विल ही गेट एनी गेम टाइम? यू नो, इफ यू कंपेयर मी टू एवरीवन एल्स, मेरे को मार्शल एक्चुअली अच्छा लगता है एज अ प्लेयर। ही हैज द पोटेंशियल। यूनाइटेड इज फेमस फॉर killing careers since 2013, so I don't blame Martial for this, but स्लाइड देगा मैन सेविया में यूनाइटेड लोन यूरोप। स्पेल। हाँ। सेविया में अगर Martial, we लोन the best in the world. Martial, we Nice the goes, best. Martial. बट हाँ, मार्शियल अगर देखोगे, इफ ही हैज अ गुड लोन स्पेल, आई थिंक ये यूनाइटेड विल ट्राई एंड सेल हिम इन द समर, एंड ही कैन एक्चुअली हैव अ गुड करियर एल्सवेयर। नहीं, प्लस अगर आप सेविया एक पर्सपेक्टिव से भी देखो तो सेविया डेफिनेटली नीड प्लेयर्स लाइक मार्शियल, इसको एक्सेट्रा, बिकॉज
अगर आप उनकी स्क्वाड डेप्थ देखो तो इतनी ग्रेट नहीं है. उनकी स्टार्टिंग 11 डिसेंट है, बट दे डोंट हैव प्लेयर्स ऑन द बेंच, यू नो, लाइक हाफ टाइम बाद इफ यू नीड सब्स्टिट्यूशंस. तो उतनी क्वालिटी उनके बेंच पे नहीं है. तो प्लेयर्स लाइक मार्शियल ऑफ कोर्स विल गेट सम गेम टाइम इन माय ओपिनियन. नाउ Gosens to Inter Milan, which was something which we weren't expecting. Gosens, in my opinion, is one of the best wing backs in Serie A. And उसकी offensive contributions काफी high रहे हैं. He scored 10 goals in last season and 12 goals in last season. However, he has been sidelined with a hamstring injury. So this was something which was shocking. I didn't think कि Atlanta will let him go on loan, but ऐसा हुआ है. So it's a win situation, I should say, for Inter Milan, although it's a loan move. So it can, of course, help them in the season and especially for the Scudetto. Abhi Julian Alvarez, I think that's his proper pronunciation, to Manchester City. So Anshuraj, what are your thoughts about this move? Is it a smart move by Pep? स्मार्ट तो है ही. आई मीन वेरी सिमिलर टू अग्वेरो. कितने मतलब ट्विटर पे तो भाई जितना भी मैन सिटी का फैन बेस है, अल्वारेज एक्स अग्वेरो वाले एडिट्स हर रोज बनाते रहते हैं. Very similar play style to Aguero. And but I honestly think that City will still try to go all in for Haaland in the summer. If anything, Alvarez might be a backup for Haaland. But even if अगर उनको Haaland नहीं भी मिले ना, Alvarez is a great option to have. He Aguero जैसे ही qualities है, he can good in the box, decisive, and he doesn't rely on penalties a lot. He's got 0 penalties in his career so far. So there is that. So he offers a great option for City, and he'll fit perfectly into the system as well. Yeah, apart from that, it is really a very big move from even for such a young. He's 19 or 20. So it's a young move from playing from River Plate to one of the biggest clubs in England. So it's a really big thing. Plus, काफी लोग तो उसको Aguero region भी बुलाते हैं. तो he's known to, you know, like dribble निकाल सकता है वो. Plus, he's really good in terms of creativity, is what I've seen. थोड़ा The बहुत. thing I find funny is City fans. We can never replace him, our real goat. Now Alvarez, the better Aguero. Pep कोई देख लेना. We cannot replace him. We cannot replace him. But ultimately, I think it's a smart move. प्रॉपर अग्वेरो टाइप रिप्लेसमेंट टीम को मिल गई है एक तरीके से, और स्ट्राइकर तो एक काफी बड़ी हंट रही है सिटी के लिए. तो इट्स रियली गुड. लुइस डियाज टू लिवरपूल. नित्यम, योर थॉट्स? आज ही लुइस कंफर्म हुए तो. डियाज, हाँ भाई आज होने वाला. आई थिंक लिवरपूल को चाहिए आई गेस डेथ, बिकॉज अगर देखा तो माने ही इज गेटिंग ओल्ड. आई मीन ही इज 28 29. साला अगेन सेम एज. फर्मिनो इज आई गेस ऑलरेडी 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो दे नीड टू रिप्लेस देयर फ्रंट थ्री, जो कि इम्पोर्टेंट है. आई थिंक जोटा इज अ रियली गुड साइनिंग, फर्मिनो का Yeah, रिप्लेसमेंट. एंड देन he can play on the आई left थिंक wing दे as well, नीड, right? yeah, and but they need two wingers. So Diaz is good on the left wing for Porto, one of the Yep. top five leading goal scorers in Europe, in the top five European leagues, that is, with the Portugal league being number five. Lekin, ha, he's a good signing. He costed around 38.5 million euros and 18 goal plus assists in the Portuguese league. It's pretty good for him. And if you see कि Liverpool का time आ ही गया था that they had to break their front three of Salah, Firmino and Mane. So it looks like they'll keep Salah and probably they'll get rid of Firmino or Mane. ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरे हिसाब से तो. Anshiraj, what are your thoughts about Luis Diaz to Liverpool? I think बहुत स्मार्ट साइनिंग है. हम लोग स्पेशली लिवरपूल फैंस एफएसजी को बहुत गाली देते रहते हैं because they don't sign any players. But this signing, I think, is a very underrated signing because Luis Diaz has been under the radar for quite some time. He was top scorer. Copa America पे भी top scorer था वो. And for Porto, I mean, उसके performances are speaking for themselves. He's a माने जैसे ही उसका play style है, like a he's good. He's got good off the ball movement, and he's ज़्यादा goal scorer ही है वो rather than a proper winger like Mane is. So I think उसका full adaptation everything हो जाना चाहिए into Liverpool system. Plus he's what 24, 25, entering his prime. I think it's a great signing by Liverpool.
ये उसकी कुछ न्यूज आई है 10 मिनट्स पहले दैट लिवरपूल हैव पेंसिल्ड इन अ मेडिकल फॉर लुइस डियाज इन अर्जेंटीना दिस वीकेंड। तो उसका गेम कोलंबिया के अगेंस्ट जो पेरू का होगा, आफ्टर दैट ही विल फ्लाई टू अर्जेंटीना एंड वहां पे उसका मेडिकल हो जाएगा एंड वर्बल अग्रीमेंट तो हो ही चुका है प्लेयर का, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी है। इट्स नाइस। सो फाइनली जो लास्ट ट्रांसफर हमारा हुआ था, एंड इनफैक्ट हमने जितने भी अब तक ट्रांसफर मेंशन किया उससे पहले हुआ था, इज ब्रूनो टू न्यू कासल। तो नित्यम, could you just talk about that deal? And Bruno Guimaraes, he's a very good Hmm. passer of the ball. अच्छा CDM है. He was linked to Arsenal and there were मतलब throughout the summer Arsenal आएगा, but apparently हम लोग सिर्फ outgoings करेंगे, ingoings ने हम लोग संन्यास ले लिए. No more incomings for 3 years after what we spent in the summer. लेकिन हाँ, he's an excellent player. I think Newcastle definitely needed the depth in the midfield area. I think डेप्थ छोड़ भाई, Newcastle. क्वालिटी चाहिए। डेप्थ डेप्थ चाहिए, तो छोड़ बात भाई, की स्टार्टिंग बात है। 11 इंप्रूव करनी है पूरी हाँ हमको। हाँ, सॉरी माय हाँ बैड. हाँ। लेकिन हाँ, सॉरी, बेसिकली बोलने का पॉइंट था कि न्यूकासल को ऑलमोस्ट नया स्क्वाड चाहिए, तो ऑफ धीरे धीरे कोर्स। करके आई थिंक दे आर बिल्डिंग. नहीं, बट मेरे को समझ नहीं आया, ही इज प्लेइंग फॉर लियोन इन लीग वन, मतलब लियोन इन फ्रांस इज वे बिगर देन व्हाट न्यूकासल इज इन इंग्लैंड। तो उसने ऐसा मनी छोटे मनी क्लब में मनी क्यों मनी चले मनी गया? मनी. मनी मूव्स, हाँ। मनी भी है, एंड फ्रेंच क्लब्स का भी हाल, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, स्पेशली आफ्टर कोविड। हाँ, लियो, सो दे आर आई थिंक ट्राइंग लियो टू, हैज टू सेल. या या दे हैव टू सेल टू कीप हम्म। देमसेल्व्स अफ्लोट। एंड हम्म। प्लस प्रीमियर लीग में वेजेस बहुत इन्फ्लेटेड है, सो इधर वे ही इज गेटिंग अ बिग पे आउट। That was the video for today, guys. जो भी ट्रांसफर्स अब तक हो चुके हैं in the last 1 week, should I say, हमने डिस्कस कर लिए हैं. And right now, after this video is out, we'll be discussing the possible transfers which are likely to happen in the summer or right now. So, for more top quality content, stay tuned for Football Parliament.